Hello, everyone. Good evening, and welcome to this YouTube live session of ours, which is the Budget Series 3. And we have been doing this, pre-budget, and we promised you that we'll be back post-budget as well, decoding the budget, and that is what is the topic for today's session. And definitely, we'll help you out in decoding the same and in explaining the same. In fact, first of all, let me just tell you prior to we get into the nitty-gritty of the budget, friends, that yesterday our honorable finance minister presented the union budget 2021, and which is very much welcome by the capital markets, and definitely by everyone, by the corporates, and each and every individual, I would say, of this or each and every citizen of this country, because what government has planned is, the approach has been pro growth, and that is what was required since years, and that is what was expected since BJP got elected. And finally, we have this kind of a budget, and so we'll now deep dive into it, right? So let me just start with the fiscal deficit numbers. For FY 2021, right? The fiscal deficit is expected to remain at around 9.5%, okay, of the GDP. And but what is also expected that the target GDP until 2025-26 will be coming down or slipping to around 4.5% or so. So initially, we would see that a jump or a spike in this fiscal deficit numbers, that is 9.5% of the GDP, and obviously government doing so much of capex would also lead to do that. But then on the secondly, what we are seeing is that going forward in the longer run, with the help of this capex, the growth which is going to come, and because of which I would say that it will definitely help us to achieve higher GDP, and because of which the fiscal deficit number will drop to 4.5% of the GDP by the end of FY 26, right? Thereafter, the budget started with the agriculture and rural focus. So we'll first, discuss about that. It was clearly mentioned that the overall by honorable finance minister that there was a good amount of allocation to the rural infrastructure development fund from 30,000 to 40,000. So there is an increase of almost 33.33%. That is by one third almost allocation to the rural infrastructure and development fund, right from 30,000 to 40,000 crores. Agriculture credit will be provided to the target of almost 16.5 lakhs in FY 2022. So definitely this will help or provide adequate credit to our farmers, right? Second focus was on the healthcare sector. Now this is very much important. In last calendar year, we all have gone through this pandemic and in this difficult times. So going forward, this sector really is quite important, I would say, and it's good that government is focusing on the same. So as far as healthcare sector is concerned, almost like 2.23 lakh crore budget outlay of health and well-being is there for 2021 and 22, compared to that of almost 94,000, 95,000 crore of the budget which was allocated to the healthcare sector. So you can see there is a shift of almost 137%, right, from last financial year, or I would say rather this current financial year, to FY 22. So that is something huge jump, I would say, as far as spending or allocation or budget outlay for healthcare sector is concerned. 35,000 crore outlay for COVID-19 vaccines. Now this is actually quite necessary, I would say, and this will help our country to come out of this disease very soon. So it's good that government is focusing on this as well, and we have been seeing that our government has been taking initiative to, in fact, help the neighboring countries as well. So this will help us to basically have a good bond with our neighbors as well, neighboring countries as well, have a good relationship with them as well, and that will going forward will help our country as itself for having a good trade balance, okay, and trade surplus as well, right? So that definitely these things are important, and government is in the right direction. PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana outlay of almost 64,180 crore over a period of almost 6 years. So that is a kind of budget allocation is there for this particular sector. So the impact directly on this sector is going to be
that it will help developing the capacities for primary, secondary, and tertiary healthcare systems, right? It will also help us strengthening the existing national institutions as well as developing or creating new institutions, which is also very much important. Now, let me come to the infrastructure sector. And I'm sure that all of us know that this is one sector after healthcare. Healthcare was important, any which is important. But then infrastructure is one sector which require this kind of a focus since years. And finally, this government, or I would say current finance minister, has actually done that. And it's a very bold step, I would say, that having such a rise in the capex and taking this kind of a bold decision. I would say that I would really compliment and appreciate the efforts of the finance minister as well as the government. So infrastructure sector, there is an increase in capex to the tune of 5.4 lakh crores allocated to this sector, 34.5% more than the budget estimate of 2021. There is a hike of almost 34.5%, which is really good. I would say that, it is mainly to capitalize development financial institution, okay, DFI for infrastructure financing, 20,000 crores, right? So that is also one very good step taken by the current government. This impact will have definitely, this will have an impact to the lending portfolio will be at least 5 lakh crores for this DFI in next 3 years time. Overall boost to infrastructure sector. Because of this, I would say there would be a turnaround in our economy, because there are many other sectors, friends, which are linked to the infrastructure sector, right? There would be a lot of employment generation, because of which there would be a lot of job creation. There would be a lot of income generation. This will definitely help the government to have a direct impact on the direct tax collections. The boost or increase in demand. This increase in demand will lead to consumption or increase in consumption in different sectors or different, I would say, products. May it be consumer durable products, may it be auto sector, may it be tourism and travel and tourism. So overall increase in infrastructure sector. Infrastructure and real estate is one such sector which definitely help us or in generating huge employment, and because of which I would say it helps to increase the overall contribution to the GDP as well, right? It has a good contribution to the GDP, and in fact, I would say if there are some efforts taken for particularly this sector, and I'm sure like cement sector, metal sector on the other hand, the employment generation out there because of the demand out here. So you can link these sectors which are related to the infrastructure sector, and if there is a demand or a good, I would say, growth in the infrastructure sector, then that will have an effect or a positive impact on which other sectors. That is very much important to know. So as I said, the raw materials, maybe the cement, the metals, and there are so many other sectors. And from the consumption side also, I've just told you that auto sector, or maybe tours and travel and tourism. So I would say that hence I said I really compliment this government for doing or taking such a bold step. And next time move on to within that infrastructure development sector only, we move on to roads and highway sector. So there is an outlay of almost 1.8 lakh crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which 1.08 crores is for capital expenditure for CapEx. This will help us to have better infrastructure, better roads in a country. Definitely, the logistics will benefit quite a lot from this. And overall, if you see that one more beneficiary of this who is going to be the auto and transportation sector, the logistics sector. So I would say that this will have a positive impact on that sector directly, right? So you can focus on those sectors as well going forward. This is a good step. As far as railways is concerned, there's an outlay of almost 1.10 lakh crores for railways, of which 1.07 lakh crores is for the capex. So we are going to see a good demand out there as well. You can see that it is expected, or it has been announced that the western dedicated freight corridor and eastern dedicated freight corridor will be commissioned by June 2022. This is definitely going to help a lot in the logistics transportation, definitely, friends. And
I'm sure a kind of just example of Western corridor would be the connectivity of the Delhi, which is the national capital, and obviously the trade capital, I would say, would be Navi Mumbai, right? So this will definitely help us as well going forward. And the impact will be, I've already said that what are going to be the impacts, but rather than again, just to sum it up, the impact of this would be bringing down the logistic cost for the industry is at the core of the strategy to enable make in India. This is the point which I wanted to make. And government is focusing quite a lot on make in India. Once you have manufactured, the goods should reach to the end consumer. Then only there will be an increase in demand and acceptance as well. The goods once manufactured are not reaching out. So generally, friends, I'll let me also give you an instance, of the international markets wherein we have Dow Jones Industrial Average out there, we have S&P, we have Nasdaq, and we have Dow Jones Transportation Index. The generally Dow Jones Industrial Average has most of the manufacturing companies listed within it, right? Like we have Nifty Bank, Nifty Financial Services, Nifty Auto, right? Likewise. So what happens is you come to know from that only that if Dow Jones Industrial Average is moving higher, and if Dow Jones Transportation Index is not moving higher, that means those goods which were getting manufactured or which are getting manufactured are finally not getting delivered to the end consumer. Why? There are two reasons for it. One is either there is slippage, or I would say a drop in the demand. That is the reason there is no logistics, or maybe there is no transport, or otherwise I would say maybe there is import from the other countries, maybe. So the thing is that to promote this make in India, okay, if we have provided this kind of an infrastructure, okay, what would happen is generally those things which are manufactured within India will be transported well on time and to the end user, and definitely that will help to boost the demand, and that will lead to growth in the economy as well. Other infrastructure development projects, right? So Jal Jeevan Mission Urban to be launched, okay, an outlay of almost like 2.87 lakh crores over the period of 5 years. Now this is a big other thing which has been announced by the government, I would say, which is half of almost the for which is for the I would say, or maybe as good as that of roads and transportations and maybe railways, which sums it up to almost like 2.3, 2.4, and for Jal Jeevan Mission it has been for 2.87 lakh crores. So this is very much important. I would say what are the impact of this is that there is also one more announcement which was done, Urban Swachh Bharat Mission 2.0, okay, which will be implemented and over 1.4 crores over a period of 5 years from 2021 to 2026. Now see, Jal Jeevan Mission, okay, why this is required, okay, friends, is that there should be proper sanitization, proper hygiene, and water reaching out to maybe well to the rural areas as well, right? So this is what is there as far as this development is concerned. Next sector which we come to, wherein we had the announcements from the budget, was on textile, power, and energy sector, right? Now we can focus on these three sectors as well, and there has been a launch of Mitra. What is Mitra? It is Mega Investment Textile Park, okay, under which there will be seven textile park will be established over a period of almost 5 years. The reason for this is to attract the foreign direct investments, definitely to boost the development, the growth in the textile sector. And I'm sure with the development or with this kind of an initiative of that, like that of Mitra, under which 7 textile parks will be established over the period of 3 years, I'm sure that there will be a lot of growth in this sector as well. As far as Discom scheme is concerned, that is power distribution sector scheme is concerned, almost like I would say then 3.05 lakh crore over the period of 5 years to be provided to this sector, and this will definitely help or provide assistance to the Discoms for infra creation. So allocation of almost 3.05 lakh crores to the Discom sector will definitely help them out to in fact do the capex as well.
and will definitely help these companies within this sector to come out of the bad shape which they are into. Ujjwala scheme, which will benefit almost, which has already benefited 8 crore households till now, okay, is extended to over 1 crore more beneficiaries, right? So this is what is as far as textile, power, and energy sector is concerned, friends, so far, and we are definitely quite bullish on the textile sector, right? Let us now come to the financial sector, and that also belongs to one of the sector we are into. Okay, the financial sector. So, yeah, this is really important. I would say that see there is one no, ARC and AMC, which is going to be set up to take over the stress assets of the banks, and इसमें मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल सेक्टर में कि the stress assets which are been set up for ARC and AMCs, इसमें क्या होने वाला है कि हमें almost like these these will be transferred to maybe once they are made good, I would say, once these the stress assets are transferred to this ARCs and AMCs, and एक बार वो clean up हो जाए, they'll be transferred to some maybe AIFs, and thereafter the valuations of from the same will be carried out. So there'll be a revised valuation out there. But this setting up this kind of ARCs and AIMs is really important. Okay, there will be almost like 20,000 crore recapitalization for the public sector banks during 21-22. Okay, one major announcement, okay, and which they have announced is for 2021-22 is these investments in almost many of the public sector enterprises. One of which is एक तो है BPCL, second है Air India, Shipping SCI, Shipping Corporation of India, Concor, IDBI Bank, BEML, Pawan Hans. ये सारी कंपनीज में इनफैक्ट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, ये जो सारी कंपनीज है फ्रेंड्स, ये सारी कंपनीज में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस किया है और कहा है कि 21-22 में ये सारी कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और इसके कारण ये होगा कि गवर्नमेंट का जो ये केपेक्स प्लान है उसमें उनको काफी रिलीफ मिलेगा, राइट? एंड एक चीज होती है ना कि वो लोग खर्च रहे पैसा, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो दिस इज वन रूट जहां से पैसा आएगा. सेकंड, कहां से पैसा आएगा? डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रेज इट, सो बोरोइंग्स होगा, राइट? बोरोइंग्स काफी तरीके से हो सकते हैं, राइट? इट कैन बी एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इट कैन बी इंटरनल बोरोइंग्स थ्रू बॉन्ड्स, राइट? थर्ड थिंग इज कि जो ग्रोथ आएगा, ग्रोथ से डायरेक्ट टैक्स पे इंपैक्ट आएगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दोनों के बढ़ने के कारण, दोनों का कलेक्शन बढ़ने के कारण भी उनको काफी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब दे विल बी मैनेजिंग दिस थिंग्स, राइट? नाउ लेट मी कम टू दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके, अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट से मैं आपको बता देता हूँ कि कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है. लगभग 2.25 लाख करोड़, इंक्लूडिंग LIC IPO, जो भी हिट करेगा मार्केट को फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, सो आप अगर देख लो कि ओवरऑल जितना भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने प्लान किया उसका ऑलमोस्ट लाइक 30-40% डेफिनेटली इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट्स, राइट? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Manufacturing companies need to become an integral part of the global supply chains, possess more competence and cutting edge technology. So overall, अगर आप, मैं कहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग पे काफी फोकस किया है, एंड ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years अलॉट किया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को. डेफिनेटली इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 5.5 लाख करोड़ का अगर केपेक्स करने का प्लान गवर्नमेंट ने किया है, उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन वगैरह जो होगा, सेम विल हैपन टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल. I mean, that will lead to a lot of job creation, bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions. So these are the impacts for the manufacturing sector. Let me now come to the बहुत ही बड़ा announcement. इनफैक्ट अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वहां पे भी हुआ था, इंश्योरेंस एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में. एंड ये दो इनफैक्ट फ्रेंड्स मैं आपको कहूंगा, ये दो सेक्टर में से ऑटो सेक्टर तो मैं काफी टाइम से आपको कहते ही आ रहा हूँ. लास्ट अगर आप देखें तो दिसंबर से मैं हम कहते आ रहे हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा, जिससे काफी बूस्ट मिलेगा ऑटो कंपनीज को, बराबर है? तो पहले मैं इंश्योरेंस का अगर आपको बात बताऊं तो FDI लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज हो गई है 49% से 74%, राइट? एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प क्वाइट लॉट एज फार एज रीचिंग आउट टू द क्राउड व्हिच इज और आई वुड से द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ये काफी अच्छा रहेगा, इतना सारा इन्वेस्टमेंट्स अगर आता है
सो डेफिनेटली इससे भी इसका भी इम्पैक्ट सेम एज दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर आप बोलोगे, सेम एज दैट ऑफ इंफ्रा आप बोलोगे, जॉब क्रिएशंस काफी होंगे. एंड द बेस्ट थिंग वुड बी इट विल हेल्प टू रीच आउट the each and every citizen of India, right? So FDI लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा दी गई है 49% से 74% तक. ओके, एंड सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली. ये जो आप एफडीआई लिमिट वगैरह बढ़ा तो इसी से तो पैसा आता है, राइट? तो आप डिसइन्वेस्टमेंट्स करोगे. अब इसमें से कुछ कंपनीज इंडियन होगी, आई वुड से प्राइवेट होगी, कुछ होगी गवर्नमेंट, राइट? और ओवरऑल एक चीज अगर आप देखें तो ये हो रहा है कि क्लियरली इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है इंडिया में. ओके, एंड ये इन्वेस्टमेंट से के हेल्प से ही तो they will be able to meet up the capex plans which they have, right? Second thing is voluntary vehicle scrappage policy announce की गई है, right? I mean for PVs, that is passenger vehicles, almost 20 years रखे गए. For CVs 15 years है, right? I mean they will have to go through the fitness test, right? अगर आपको जोकिंगली कह दूं तो जैसे मैच के पहले भी सारे प्लेयर्स को एक फिटनेस टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है, एंड जो फिट होते हैं वही खेल पाते हैं. सिमिलरली ऑटो में भी they have to, these vehicles have to pass through the fitness test. Okay, and अगर लगा ऐसा कि vehicles are fit to be run on our Indian roads, it will be allowed, as it will be considered, it will help to basically go or through this scrappage policy. और इससे दूसरा बेनिफिट क्या है, एक तो है कि एयर पोल्यूशन जो आपका बढ़ते जा रहा है डे ऑन डे, it will help to bring that down. Secondly, हमारे जो इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, राइट? सो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ने के कारण आपके जो ऑयल इंपोर्ट्स है उस पर भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, राइट, इस स्क्रैपेज पॉलिसी से. एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प द ऑटो कंपनीज, बिकॉज those vehicles which are not fit, okay, to run on our Indian roads, वो सारे ही व्हीकल्स को स्क्रैप कर नए व्हीकल्स परचेज करने होंगे, जिसके कारण डेफिनेटली ये सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा. Along with this sector, friends, ये सेक्टर के रिलेटेड जो दूसरे सेक्टर्स है, दैट इज ऑटो एंसिलरी, उनको भी काफी बूस्ट मिलेगा. सो आई एम श्योर विद दिस voluntary vehicle scrappage policy, it will help us bringing down the pollution and have a positive impact on the oil imports, as well as it will be a big boost for this sector and auto ancillaries as well, right? That abhi, this was actually the part A, friends, of the budget. हमारा बजट जनरली पार्ट ए और पार्ट बी में आता है. तो पार्ट बी में जनरली जो कवर होता है वो टैक्सेशन पार्ट कवर होता है. एंड आज की यूट्यूब लाइव सेशन में इनफैक्ट आई हैव माय टीम एज वेल हियर, ओके, एंड वन ऑफ माय टीम मेंबर फ्रॉम द फंडामेंटल रिसर्च साइड, Saurabh, Mr. Saurabh Joshi, he is also joined with me, and he will be covering the part B, which is the taxation. Okay, so now I hand it over to Saurabh, and he will go through the direct and indirect tax. Yes, Saurabh, over to you. Yeah, thank you, sir. Thank you for providing me the opportunity to speak with you in this platform. So now I'll begin with the announcements which has been made in part B of the budget, which is related to taxation. So basically there are two parts in the just a minute. So basically there are two parts in this budget tax related announcements. So first is the direct taxation. So in direct taxation, many announcements have been made which are very major. So in affordable housing, we can see one major announcement that has been made. It is like 1.5 lakh rupees interest which has been provided as deduction till 31st March 2021 is now extended to one more year, that is 31st March 2022. On the same line, we can see tax holiday for affordable housing projects has also been extended for one more year, which is till 31st March 2022. So ये इसलिए करा गया है ताकि अफोर्डेबल हाउसेस की सप्लाई प्रॉपर मेंटेन रहे. सेकंड बिग अनाउंसमेंट इज रिलीफ टू सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन्स को काफी रिलीफ मिली है इसमें. सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हु आर अबव 75 इयर्स एज एग्जेम्प्ट कर दी गई है, जिनकी इनकम केवल और केवल पेंशन और इंटरेस्ट से है. सेकेंडली इनकम टैक्स ऑडिट की एग्जेम्पशन की लिमिट भी बढ़ा दी गई है फ्रॉम 5 करोड़ टर्नओवर टू 10 करोड़ टर्नओवर.
this is only for those who are carrying 95% of their transactions digitally. So ये digital transactions को promote करने के लिए ये step लिया गया है. So in indirect tax, these are the announcements which are major, and now I'll move on to indirect taxation. So indirect taxation में to create a level playing field, एक level playing field for our domestic manufacturers, कुछ custom duties बढ़ाई गई हैं और similarly कहीं पर there are few products where custom duty has been reduced in various raw materials and inputs in order to reduce the cost of input. Majorly in textile sectors, steel sectors, aviation sector, and animal husbandry. So I'll now move on to these agricultural products where the custom duties has been increased. Basically in prawn feed, fish feed, the custom duty has been increased from 5 to 15%. So this is really helpful for our domestic manufacturers who are in this fish business. And also in auto sector, the custom duties has been increased from 7.5% and 10% in various products to up to 15%. Similarly, capital goods and machinery, where there has been no excise duty, custom duty has been increased to 7.5%. In tunnel boring machines and tunnel boiling machines also, the custom duty has been increased to 2.5%. So जैसा कि हम देख सकते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें भी 7.5 से 15% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है. लेदर में भी आपकी जो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी वो भी 10% कर दी गई है. मेटल प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी 10 से 15% कर दी गई है. सिमिलरली प्लास्टिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी हम 10 to 15% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है. सो ये सब इसीलिए किया गया है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट मिले, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. दे कैन कम्पीट विद those who are globally who are competing with the global players. So in terms of raw material, so petrochemical industry mein we have naphtha where the custom duty has been reduced from 4% to 2.5%. So these reductions in custom duty ये जो कर रहे हैं ये अपना जो domestic players है उनका raw material सस्ता हो, उनको उनके margins थोड़े सुधरे, उनको help मिले, इसलिए ये सब किया गया है. सो बेसिकली फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स में भी जिसमें कि 10 से 12.5% जो ड्यूटी थी उसको कम करके 7.5% कर दिया गया है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी 7.5% से 5% ड्यूटी कर दी गई है. ये भी काफी बेनिफिशियरी रहेगा. टेक्सटाइल प्लेयर जितने भी हैं उनके मार्जिन काफी अच्छे आएंगे आगे जाके. एविएशन सेक्टर में सिमिलरली जो रेट ऑफ ड्यूटी था सर्टेन पार्ट्स में इंक्लूडिंग इंजन्स वो 2.5 से 0% कर दिया है. एनिमल हस्बेंड्री के कुछ रॉ मटेरियल से फीड एडिटिव्स और प्री मिक्सेस उसमें भी कस्टम ड्यूटी कम करके 20 to 15% कर दी गई है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सेशन पार्ट. आई नाउ हैंड इट ओवर टू मिस्टर जय ठक्कर. थैंक यू सर. थैंक यू. Okay, thank you, Saurabh, for covering the part B. And अच्छा, अभी ये तो था कि हमने आपको बता दिया कि ओवरऑल बजट में क्या आया और क्या गवर्नमेंट के प्लान्स है टेकिंग इट फॉरवर्ड के पार्ट ए में कि कहाँ पे एक बूस्ट मिला है, एक सपोर्ट मिला है. एंड सेकंड पार्ट में हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए. सो ये सारी चीजें हमने आज कवर की है. बट मैं आपको बिफोर लिविंग अगेन आई वुड लाइक टू सम इट अप. ओके, ये जो सारी चीजें हमने बताई, आई वुड लाइक टू सम इट अप. एंड इफ आई सम इट अप देन आई वुड से दैट लेट मी क्विकली गो थ्रू इट. कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने एक अच्छा फोकस रखा है. डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो स्टेप्स लिए गए that will provide enough of credit to our farmers. हमारे farmers को काफी अच्छा खासा मैं कहूँगा financial support रहेगा, which will, and they are the backbone of the economy. So it has been taken well care. Well care has been taken as far as agriculture and rural focus theme of the government is concerned. And I would say it will definitely help the farmers. And एक और चीज मैं कहूँगा कि generally अगर आप देखें कि खाली ऐसा नहीं किया गया है ये बजट में कि एग्रीकल्चर पे ही फोकस कर दूसरे कोई सेक्टर्स पे फोकस ना करे, जहां पे हमारे वहां पे डेवलपमेंट इतने सालों से रुका हुआ था, नहीं हो रहा था. राइट. सो जो अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उस पर भी काफी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है रेदर देन जस्ट प्रोवाइडिंग दी सब्सिडीज. राइट. सो ये एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है बजट में. मैं कहूँगा कि कम ध्यान रखा गया था
सब्सिडीज पर और वो सारी चीजों पर इनफैक्ट ज्यादा फोकस किया गया है, केपेक्स पर और ग्रोथ पर. सो आई वुड से दैट दिस इज एन एक्सपांशनरी बजट, if I have to just coin it in 2 words. So ये एक बहुत ही अच्छा बजट. I would say if I have to rate it, I would rate it as 9 on 10. Obviously, there is always room to improve, but मैं कहूँगा कि बहुत ही एक अच्छा बजट. हेल्थ केयर सेक्टर पे भी उन्होंने ध्यान रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी ऐसे स्टेप्स लिए गए बराबर है, जिसके कारण जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 140% का एक there is an increase of almost 140% as far as एक बढ़त देखने मिली हमें उतनी, जिसमें उनका जो केपेक्स प्लान है लगभग जैसे मैंने बताया 2.25 लाख करोड़ का बजट आउटले है फॉर हेल्थ केयर सेक्टर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑलमोस्ट 95,000 करोड़, राइट. सो ये बहुत ही सारे अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, ये सेक्टर रिलेटेड है, वो उनको बेहतर बनाने के लिए और ऑब्वियसली और नए ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने के लिए भी एक काफी अच्छी योजनाएं बनाई गई है. और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेफिनेटली, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है ये गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे इतना अच्छा केपेक्स प्लान लेकर आए हैं. ऑलमोस्ट 34.5% का एक जंप हमें देखने मिल रहा है, 5.5 लाख करोड़ का एक बजट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट इज रियली ग्रेट. एंड उसमें भी ध्यान रखा गया है कि रेल, रोड, वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, कितना केपेक्स वहां पे होगा. तो ये सारी चीजें तो ध्यान रखी गई है. इससे मुझे एक चीज बहुत समझ में आ रही है फ्रेंड्स कि एक डेवलपमेंट तो देखने मिलेगा, जॉब क्रिएशन देखने मिलेगा. सेकेंडली, हम अब बढ़ रहे हैं फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप नेशन. ये जो फर्स्ट स्टेप ये लिया है ना, एंड जब भी एक कंट्री का, मैं आपको बताता हूँ, यू कैन कंपेयर इट एज वेल एंड स्टडी एज वेल, कि जब भी कोई कंट्री का डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप इकोनॉमी की तरफ मूव होती है ना, तो वो कंट्री में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने बढ़ते हैं और वही एक गोल्डन पीरियड होता है. तो बिजनेस करने के लिए तो डेफिनेटली अच्छा पीरियड होगा ही, और अगर बिजनेस करने के लिए अच्छा पीरियड होगा, अगर अर्निंग्स अच्छी होने वाली है, तो उसका सीधा आपको इम्पैक्ट दिखने वाले है स्टॉक मार्केट के ऊपर, राइट फ्रेंड्स. That clearly indicates कि Indian stock market or capital markets are also going to perform quite well from here on, right? So I would say this is something to keep in mind. We are moving now from developing nation to developed nations, right? And यही एक पीरियड जो होता है ना कि हम एक it's like we call this a poor economy, और वो पुअर इकोनॉमी से आप धीरे धीरे बढ़ते हो डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ. तो वो एक जो टाइम होता है वहां पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिलता है और लोगों को अच्छी इनकम होती है वहां पे. एंड हमारे सेक्टर की बात करूं, अगर शेयर बाजार की बात करें, तो शेयर बाजार में वो एक पीरियड होता है जब भी एक बोलते हैं ना, एक मूव होता है ना एक फेज में से सेकंड फेज में जाने का, तभी एक बड़ा पैसा बनता है. तो वो तो हो चुका था. फिर इतने टाइम से हम बोला ना कि कंसोलिडेशन ही हो रहा था, हमारी इकोनॉमी में कंसोलिडेशन हो रहा था. अगर आप देखें कितने सारे प्रॉब्लम्स है बैंक्स को लेकर, तो बैड बैंक भी बनाया गया है, वो कंसेप्ट भी लाया गया है बजट में. तो ये सारा चीज हो रहा था. अब ये अगर मैं कहूंगा कि एक पूरा एक ट्रांजिशन होने वाला है डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ विद दिस काइंड ऑफ अ बजट, आई एम श्योर. सो इससे हमारे शेयर बाजार को बहुत फायदा होगा, निवेशकों को बहुत फायदा होगा, एंड ऑब्वियसली मार्केट इतना अच्छा ट्रेंडिंग रहने वाला है फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो डेफिनेटली ट्रेडर्स को भी फायदा होगा. रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने काफी सारा कवर किया. टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे मैंने कहा था कि इंश्योरेंस में एफडीआई लाया गया है. मैन्युफैक्चरिंग, सो ये मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हिसाब से बूस्ट दिया है, उससे काफी जॉब क्रिएशन होने वाला है. एंड डेफिनेटली आई एम श्योर दैट उससे हमारी जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी नीचे आ जाएगी. और इन्फ्लेशन एक चीज है, मैं इससे इन्फर कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि इससे एक चीज है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है गोइंग फॉरवर्ड. बट देन आई एम आल्सो श्योर कि अगर ग्रोथ आता है तो ग्रोथ के साथ वो इन्फ्लेशन मैनेज हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. एंड अगर मैं आपको इफ आई हैव टू सम इट अप और इफ आई हैव टू समराइज द एंटायर बजट एट द एंड, तो आई वुड से दैट the budget was very positive, growth oriented. Several steps were taken to revive the economy in the near term. The government has increased the infrastructure spending that will help in creating jobs benefiting other industries as well, right? Not much
टिंकरिंग इन टैक्सेशन इज अनदर पॉजिटिव। अब बाजार में और बढ़त हमें क्यों देखने मिली पता है? अगर आप कल का मार्केट भी देखिए फ्रेंड्स, तो मार्केट स्टार्टिंग में जब तक ये सारे जो केपेक्स प्लान्स थे गवर्नमेंट के, जो ग्रोथ के प्लान्स थे गवर्नमेंट के, तब तक तो मार्केट अच्छा ऊपर था ही। मार्केट सेकेंड हाफ में कि पार्ट बी का अनाउंसमेंट जब होने लगा इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का, तब और क्यों ऊपर गया? वो कारण यही है कि देयर वाज नॉट मच ऑफ टिंकरिंग इन टैक्सेशन इज अनदर पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव नहीं आया वहां पे, वो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव था कल के मार्केट में अगर आप देखें और कल के बजट में देखें। एंड दैट इज व्हाट आल्सो मार्केट्स हैव सेलिब्रेटेड। आज देखिए आप तो फिर से मार्केट इसीलिए ऊपर था और आगे जाके भी डेफिनेटली मार्केट इज गोइंग टू चीयर दिस। एंड गवर्नमेंट हैज चोजन infra push and capex revival in the budget and not shied away from some fiscal slippages. Okay, automobile, insurance, healthcare sector, pharma, financial, city gas distribution, public sector banks are likely to get benefit from this union budget, जो मैंने आपको क्लियरली पूरा बता दिया। सो एक ओवरऑल अगर मैं आपको कहूंगा तो जैसे मैंने कहा कि एक एक्सपांशनरी बजट आया है फ्रेंड्स, राइट? और मैं कहूंगा सबसे इजी बजट आया है, ये भी मैं आपको कहूंगा लास्ट कितने समय में। तो एक इजी बजट सभी लोगों के अच्छे के लिए और ग्रोथ के लिए। एंड वी रियली वेलकम दिस एट MSFL एज वेल। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ से हमें शेयर बाजार में बहुत ही अच्छी बढ़त देखने मिलेगी। जहां तक शेयर बाजार के लॉन्ग टर्म, अभी मैं आऊंगा कि इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए अब यहाँ से। तो अगर आपको पता रहेगा कि मैंने जब लास्ट मेरा यूट्यूब लाइव सेशन किया था, तब मैंने आपको कहा था कि अगर बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ फॉर दैट पर्टिकुलर डे, राइट, सो आपको बाय कर कर जाना है, वहां से एक शॉर्ट टर्म बॉटम हो जाएगा। अगर वो दिन पे अगर मार्केट गिरा तो शॉर्ट टर्म टॉप हो जाएगा। मगर इट हैज हैपेंड एक्चुअली एज एंटिसिपेटेड। वो दिन मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ और मार्केट में तेजी देखने मिली, राइट। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि नीचे में जो सपोर्ट है इम्पोर्टेंट निफ्टी का, वो करीब करीब 14,300-400 के आसपास है शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में 14,000 का सपोर्ट है निफ्टी का। जब तक 14,300-400 के लेवल्स हेल्ड करते हैं, 14,000 के लेवल्स हेल्ड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। जहां तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का सवाल है, 50,000 तो सिर्फ एक नंबर है। हमें और भी बड़े ऐसे ही आंकड़े देखने मिलेंगे और भी अच्छी ग्रोथ मार्केट में हमें देखने मिलेगी। थैंक यू सो मच।